Hi everyone, welcome to today's video. So first and foremost, I hope that you are making good money in the stock market. If you have been following this channel for the last 2 years, you guys know that I started buying quite aggressively when the market was roughly around 17,500. अब वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. In fact, last 1 year I had been extremely bullish on small mid caps. They have all given roughly 40% run up. That was phase 1. Okay. Now starts phase 2, where I have restarted my buying. I feel that good money is to be made in the next 6 to 12 months. So I'm buying a lot of things. For example, today I bought all this stuff. So on this video, I'm going to do 2-3 things. Number one, I'm going to help you understand why the markets are likely to give a breakout in the next 6 to 12 months. अच्छा run up बनेगा. Where will that run up be? And more importantly, what type of low risk, high risk, medium risk opportunities you can explore. इतने क्वेश्चंस आते हैं कि यार HDFC बैंक कितना बड़ा है, कितना ही रिटर्न बन जाएगा, ऑल दिस भाई, दैट्स अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी. इफ यू वांट टू 2x 3x योर मनी, then you have to go to another category of investments. So I'm going to explain all these different categories. My humble request is very simple, that please watch the macro part of this video, which is part 1. Understand the logic. Without understanding the logic, सिर्फ stock के नाम note कर लोगे, कल को 10-15% गिर जाएंगे, then you will start trembling, right? So please do not fall into that trap. If you are from that category, please stop watching my channel, go away. So that's point 1. Then watch the second half of the video where I will relate this macroeconomics to specific stocks. So yes, stock specific डिस्कशन भी होगी, आपको मजा आएगा. सो लेट्स बिगिन एंड जस्ट अ वेरी क्विक नोट कि पहले तो आप लाइक बटन दबा दो सो दैट दीस टाइप ऑफ वीडियोस रीच आउट टू मोर पीपल. सेकंड, लेट मी आल्सो टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट. बहुत मजा आता है मार्केट बढ़ता है तो, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी इक्वली कंसिडरेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर अर्निंग पोटेंशियल. नाउ वन वे ऑफ डूइंग दैट इज टू लर्न ट्रेंडिंग skills, especially the skills that are going to create a massive impact on the future. So as per a recent study which was done by World Economic Forum, approximately 85 million people are going to lose jobs due to AI or artificial intelligence. It is going to have a massive impact on the world. So इससे narrative क्या निकल के आता है कि that we have to pick AI related skills. Now one great way and absolutely free way of learning about AI is to attend the workshop by Growth School, who are the partners of today's video. They are running a workshop, and if you are watching this video, you can attend this workshop for free. It's available to viewers who will use the link in the description and comment box to sign up for the workshop. So for you guys, it will be absolutely free of cost. Please remember that it is only applicable to first 1000 participants who are signing up using the link in the description and comment box. The first 1000 people to sign up will get a bonus worth 2000 rupees for free. Usually this is a paid workshop, but this has been made free for my viewers. Now on this workshop, you will learn a series of tools and techniques related to artificial intelligence and ChatGPT. So irrespective of whichever industry you come from, be it freelancing, be it finance, be it tech, this workshop is going to be hyper useful for you. This has been attended by more than 1 million students all across the globe who have derived tremendous value from this workshop, and you can do the same. So I highly recommend you to register for this workshop and start learning more about AI. So on that note, let me jump right into the video and help you understand the difference between low risk, mid risk and high risk investment opportunities in the market right now. See, if the market itself falls, so right now we are somewhere around 22,000. Now, if the market falls to somewhere around, let's say 20,000, so भाई किसी भी तरीके का stock हो, most likely, almost 90-95% of the stocks are going to crash. Why? Because this is an entire market correction. So सबसे पहले तो आपका viewpoint ये होना चाहिए that are you bullish about the market? Are you thinking that market is going to go sideways, or are you bearish about the market? So अगर आपको ये clarity नहीं है, then you should not invest. You should stay on the sidelines, watch the show a little bit. When you get the confidence of investing कि अच्छा यार, अगले 6 से 12 महीने में 6 to 12 months markets are going to give a run up, then you come and invest. Okay, so that is a very basic commonsensical point. But this perspective needs to be for at least 6 to 12 months. You cannot just go and आज मैंने ये वीडियो बनाया, I'm shooting this video on like Thursday, and आपने वीडियो देखा राइट, एंड आपने खरीद लिया मंडे को जाके स्टॉक्स, एंड यार थोड़ा सा क्रैश आ गया 2-3% का, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेम्बलिंग. नो, यू आर वर्किंग विद द असम्पशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट इन 6 to 12 months टाइम. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोस्ट ऑफ अस मिस दैट. So on that note, you need to have a hypothesis of investing कि 6 से 12 months में होने क्या वाला है. So here is my 1 minute quick summary on this topic. See, before elections or around elections, there is a lot of volatility in the market. Volatility का मतलब होता है market ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है. Is this happening? Yes. Number 2 point, that during this volatile phase, you should look at mini phases when investors are not very
enthusiastic about the market, there is a little bit of fear mongering happening. ये आप चेक कर सकते हो by using something called as market mood index. For example, अगर आप ये देखो market mood index, it shows the collective sentiment in the absolute short term basis. So you can see that this is in the fear zone. In fact, 3-4 दिन पहले extreme fear में था, so that was again from a short term perspective was a good time to buy, so to say. Okay. So if you are able to explore these type of mini phases, then that definitely becomes a good time to invest. Final point आता है that you must understand something called as macro triggers. I have been saying it repeatedly over the last 1 month. I'll again say it. See, macro triggers का मतलब होता है कि यार something from macroeconomics point of view is going to favor the stock market, and that according to me is something called as interest rate cuts. Okay, right now the interest rates in the US market is effectively somewhere around 6%. They are likely to be brought down to 3%. Now ये story तो होगी ही होगी, right, कि 6% से 3% पे cut होंगे. Now how soon, that is the only thing that people are debating. अभी तक पर्सपेक्टिव ये निकल के आ रहा था कि यार फटाफट हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट कट एंड मार्केट बढ़ जाएगा. देन द न्यूज़ केम आउट कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन राइट नाउ. That is probably the best time to play this theme, right? And therefore, I am investing more and more in the market as of now. Abhi main, over the next 10-15 days, I am going to invest very heavily whenever I see a market correction. Usme we are going to buy big and sit tight and wait for these interest rate to get cut. Now, a lot of counter responses will come. You know what, Akshat? Interest rates might take a year to play out. Yes, definitely. But what we are more concerned about is फैक्टरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट? कि भाई देखो सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे. नाउ दैट इज नॉट सम हिडन न्यूज. ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गेट कट. द कंफ्यूजन इज अराउंड कि यार अब पक्का हो गया कि इंटरेस्ट रेट कटेगा कि नहीं, राइट? नाउ व्हेन ऑलमोस्ट एवरीवन्स माइंड इज मेड अप कि यू नो व्हाट बॉस, नाउ इंटरेस्ट रेट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट कट, दैट मीन्स दैट द मार्केट हैज एब्जॉर्ब्ड दिस इंफॉर्मेशन एंड जितनी भी रैली आनी थी आ गई उस चीज में. सो राइट नाउ इन द मार्केट व्हेन वी आर सिटिंग इन मिड ऑफ Feb 2024, this clarity on when the interest rates are going to get cut is not there. Okay, everyone understands that interest rate is going to get cut. So from that note, if you want to benefit from this theme, it is not a bad time to invest playing this theme right now in the market, क्योंकि अभी confusion है. This clarity will emerge over the next 1 to 2 months, and therefore I feel that there will be a mini rally because of this. So I hope that this point is clear. Then comes the second key aspect कि अच्छा यार फिर किस तरीके की चीज़ें खरीद लेनी चाहिए. Okay, it really depends on your risk appetite. For example, if you want to buy low risk stuff, then go to mutual funds. What type of mutual funds? For example, अगर आप small cap खरीद लो जाके, तो यार small cap में तो इतनी रैली आई हुई है that the chances of correction still remains high. So what you should rather do is that go with something like hybrid. So that is a better option and a slightly more safer option. If you go to stocks like HDFC Bank और Kotak Bank, इसके बारे में बहुत बात करता रहता हूँ. अब आप जाके देखोगे कि यार highest ever profits, highest ever revenues, PE is one of the lowest. So from that note, this will be considered as a low risk opportunity because the chances of fall in either of these segments is not more than like 15% अगर बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत भी आ जाती है तो. Okay, so this is very reasonable, so to say. Now, what are mid-risk opportunities? Now, if you start playing around with individual small cap, mid cap stocks, these would be considered in the mid to high risk categories. If you go to micro cap, now in a growing environment, growing business environment, when the interest rates will be cut, there will be a rally, or there is very high chances that small and mid cap companies are going to rally a lot. मैं भी आपको समझाऊंगा अभी by using specific examples. But to cut the long story short, in a good business environment or in an environment where interest rates are low, mid caps, small caps, micro caps are all going to rally. They are going to double, triple, 5x, 6x in their size. So on that note, these are mid risk and high risk opportunities because जितना ज़्यादा डिले होगा, confusion होगा इंटरेस्ट रेट में या कुछ दिक्कत आ गई in the market, then of course these things have the potential to rise also, but at the same time they have massive chances of correction also. So therefore these would be categorized as mid to high risk opportunities. So you need to be very clear which bucket you are trying to pick. So I hope that this first part is clear to everyone, that what is the macro theme playing out. Now let me use specific examples and go into specific stocks. So let us go asset and stock wise, and let us start tagging every opportunity as mid, low, high risk. And I will also potentially talk about how much money can you make from this opportunity. Of course, these are my estimates. They can of course be off, but at least it will give you one side of the entire equation. And बाकी फिर आप जाके contrary viewpoint देखो and make up your own mind. So let's begin. And the first key thing that you will see from this chart is that I have sold my IT index, 50% of it, and I have reinvested that money into something like Bank Nifty or Bank Bs, which is the bank index. अब ऐसा क्यों करा and what type of opportunity is this?
वेल दिस इज अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी. वाई? बिकॉज इंडेक्स जो होता है वो लो होता है. फॉर एग्जाम्पल इतना यार त्राही त्राही मच रही थी आज से रफली 6-7 months बैक, यार IT में नौकरियाँ चली गई हैं, अब TCS और दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही हैं. दैट वॉज द टाइम दैट आई परचेज IT इंडेक्स. आई मेड लाइक 36-37% गेन्स इन 6-7 months ऑन IT इंडेक्स. बहुत अच्छा मुनाफा हुआ. नाउ आई हैव डन प्रॉफिट बुकिंग ऑन इट. I did not run behind TCS and Infosys and all these mid-cap IT companies, this, that. आई होगी तो आई होगी रैली, हमें क्या करना उस चीज़ से? Because the way you need to think is, or the way I was actually thinking was कि देखो यार boss, if you are able to pick like a low risk opportunity, you are able to put big money behind that. There is a huge difference in investing 5 lakhs on a mid-cap opportunity. वो आपका मान लो 4 गुना हो जाए तो 20 हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, right? But on the flip side, if you invest, let's say 2 crores, and if you imagine करके चलते हैं आप में potential इतना इन्वेस्ट करने की, यू इन्वेस्ट 2 crores एंड यू गेट लाइक 35-36% गेन, तो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट तो 70 lakhs बन गया ना इन दैट 6 months. सो क्वांटम ऑफ मनी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसिडर, एंड वेन यू आर पुटिंग वेरी बिग मनी यू हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट द रिस्क. सो पिकिंग दोज लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मेक सेंस. सो बैक टू टॉपिक कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया कि आई हैव सोल्ड 50% ऑफ IT इंडेक्स एंड रोटेटेड दैट कैपिटल टू बैंक इंडेक्स. सो मैं आपको 2 minutes में समझा देता हूँ. सो ओके, सो दिस वॉज अ चार्ट दैट आई वॉज शोइंग राइट व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग IT इंडेक्स. सो आई हैड परचेज्ड इट समवेयर हियर राइट, एंड तब से अब तक इसने करीब करीब 36% गेन दे दिया है. इट वॉज मूविंग इन दिस चैनल, सो आई हैड कैटेगोरिकली सेड, आप मेरे पुराने वीडियोज देख लो, कि दिस इज लाइकली टू मूव इन दिस रेंज राइट, अनलेस द मार्केट it gives a decisive breakout and creates another channel. So this can still very well happen कि यार वो another channel में चला जाता है. अभी हाल फिलहाल fundamentally speaking I do not see it कि ऐसा होना क्यों चाहिए राइट, कि यहाँ पे ये मूव कर जाएगा. होने को तो देखो यार कुछ भी हो सकता है, बट आई फील दैट कंपनीज लाइक TCS, Infosys आर नाउ एट अ फेयर PE वैल्यू. ये एकदम ठीक है. देयर आर फंडामेंटल इशूज इन IT इंडस्ट्रीज स्टिल. Valuation has actually increased. Now why the valuation has increased? Because it has already given 36% run up. So therefore booking profits made a lot of sense to me. अब बैंक में क्या स्टोरी चल रही है? बहुत सिंपल सी स्टोरी चल रही है कि भाई साहब निम बर्बाद हो गया एंड डिपॉजिट स्लो डाउन हो गए और एसेट बुक बर्बाद हो गई और ये दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई और RBI ने बैन लगा दिए. ओके, नाउ यूज लिटिल बिट ऑफ ब्रेन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अपने टॉप से जो निफ्टी बैंक है, सो दिस इज द बैंक इंडेक्स, इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग 5% फ्रॉम इट्स टॉप. ओके, सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो टू से कि भाई 5% के डिस्काउंट पे तो मिल रहा है राइट. निफ्टी IT में वो चीज़ अभी नहीं है राइट. सो दैट्स पॉइंट 1. पॉइंट 2, इफ यू चेक द वैल्यूएशन एंड आप प्री कोविड लेवल से देख लो वैल्यूएशन कि अभी कहाँ पे है. सो from pre-COVID level, it has been almost 4 years. So in 4 years, it has given 45% run up. So ऐसा भी नहीं कि यार बहुत भारी भरकम रिटर्न आ चुके हैं on bank index. Now अब आप बोलोगे कि यार मे बी बैंक इज अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री, दुनिया भर की प्रॉब्लमें चल रही हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है. सो ओके, तो चलो देख लेते हैं बैंक में क्या चल रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेक private bank, right? So let's pick HDFC, which is my favorite bank. So यार all time high profits, all time high revenues. So 2019-20 से जो कोविड वाला टाइम था तब से अब तक it has doubled its revenue, it has doubled its profit. And how much has the stock price moved? So if you go to HDFC Bank, the stock price has not moved at all, right? So it is here 1446 and pre-COVID कितना था? Pre-COVID it was like 1300. So hardly any growth has happened. Same has happened with Kotak Bank. Same has happened with SBI. Same has happened with a bunch of other stocks. So चाहे आप पब्लिक सेक्टर बैंक उठा लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक उठा लो, not too many banks have given a run up, barring a few PSU banks, so to say. Okay? कॉर्पोरेट बैंक्स में जो टॉप टीयर ब्लू चिप लार्ज कैप कॉर्पोरेट बैंक्स हैं उनमें इतनी ग्रोथ नहीं आई है. It is clearly undervalued, right? So that is what I will simply say. It is a low risk opportunity. अब आपका नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, जो क्रिटिक्स होते हैं कि यार HDFC बैंक में आप पैसे लगाते जा रहे हो, ये वो, भाई देखो मेरा पैसा है, वट एवर प्रॉफिट्स आई एम मेकिंग, आई एम हैप्पी पुटिंग इट, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम ओके होल्डिंग इट, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई एनालिसिस एंड आई विल पुट. सो ऐसा तो है नहीं कि मैं लोन लेके लगा रहा हूँ. आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रैशनल, देन इट इज योर कॉल. ओके, नाउ सी व्हाई एम आई कॉलिंग स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, Kotak Bank as safe stocks? Because see, there is a very clear industry growth that is there in banking. There is very clear growth in their assets. For example, revenue ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो कि रिजर्व्स जो उसके होते हैं, जो कंपनी का विच इज़ कंपनीज ओन मनी, दैट इट सेल्फ हैज डबल्ड ओवर द लास्ट 4 years. So why is it that the stock will not give a run up? And मैं अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट यूज योर ब्रेन कि यार HDFC बैंक को डिस्पाइट हैविंग सच हाई रेवेन्यूज प्रॉफिट्स
how has the stock price being kept low? This is a very interesting question to explore. तो इसमें होता क्या है कि सी समटाइम्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि अगर पीई कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पीई का घटना, सो इफ पीई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्टॉक हैपेंस, then despite the companies giving very high earnings, profits, revenues, whatever good numbers you look at, the stock price will not move. The stock price might in fact fall. Now can this be permanently done? The short answer is no. And आप ये चार्ट से भी देख सकते हो. For example, if you go on the PE tab, तो आप यहाँ पे देखोगे, and in fact यहाँ पे आप देखो कि average PE of something like HDFC Bank is around 27. Right now it is at 15 PE. So PE इसका आधा कर दिया है almost, right? The PE has been made half. Okay. Now PE is a game of sentiments, right? So sentiments जब आ जाते हैं स्टॉक में, so the same industry, for example, PE उसका 20 से 40 हो जाता है, right? And the same industry जब sentiments लो जाते हैं तो उसका 40 से 20 हो जाता है, right? So opposite हो जाता है. Now the company has done everything well, right? There is nothing off कि भाई इसका NIM खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया. भाई in a high interest rate environment, the NIM is going to go low. It's as simple as that. The provisioning requirements will be high. News का तो हवा बना दिया जाता है, right, by big players. वो तो न्यूज़ पे न्यूज़ निकालते चले जाते हैं कि NIM खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, and people start panicking. ऐसा कुछ भी नहीं है. Fundamentally, the stock is solid. It's gold from that perspective. I see no problem in terms of buying bank Bs or safe things like HDFC Bank. एक और काउंटर एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार आईटीसी में भी तो ऐसी स्टोरी थी कि यार आईटीसी का स्टॉक इट डिड नॉट मूव डिस्पाइट इट पोस्टिंग वेरी गुड प्रॉफिट. सो मैं आपको पूरी स्टोरी दिखाता हूँ आईटीसी की भी कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस फेज, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल 2013 ऑल द वे टिल 2019 एंड उसके भी आगे आप ले लो तो करीब करीब 2022 तक इट गेव ऑलमोस्ट 0% रन अप. ओके, 10 साल तक 2013 से 2022 तक 0% run up. And then if you would have bought it somewhere here, right, in this zone and held it somewhere here, you would have made a lot of money. Go and check Akshat Shrivastava ITC. You would see me buying it in this range only. I could not make 100% profits on ITC, but I made like good 60-70% profit on ITC in a very short span of time. So was very happy with that purchase. उस समय भी यही मचा हुआ था कोहराम कि ITC नहीं चलेगा, दिस दैट. अब देखो, अब आपका नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि यार 10 साल तक तो यार कुछ हुआ नहीं था आईटीसी में, तो ऐसा तो नहीं कि HDFC में भी 10 साल तक कुछ नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड टू अगेन गो बैक एंड चेक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नंबर्स. सो फॉर एग्जाम्पल टेक अ लुक फ्रॉम दिस फेज कि 2012 से 2022 तक, राइट, डबलिंग ऑफ प्रॉफिट में कितना टाइम लगा और डबलिंग ऑफ रेवेन्यूज में कितना टाइम लगा. फॉर एग्जाम्पल 10 साल का फेज देखा था फ्रॉम 2013, डबल कब हुआ, राइट, इन 2022, राइट, रेवेन्यू, राइट, तो 31 से 60 हो गया यहाँ. फ्रॉम हियर टू हियर 2022 तक अगेन डबल हुआ, राइट. सो HDFC को अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज डबल करने में 3-4 साल लगे, राइट, एंड ITC को डबल करने में कितने साल लगे, 10 साल लगे, राइट. सो देयरफॉर इट्स अनलाइकली दैट HDFC विल बिहेव द वे ITC हैड बिहेव्ड. ITC में डबलिंग हुई प्रॉफिट रेवेन्यूज की इन 10 years. इन HDFC इट डबल्ड इन 4 years. Now this is not just HDFC story. Now this is the same story for a bunch of private banks in India. Now on that note, let me give a very quick snippet on a public sector bank which I had been bullish about. I had been buying. I had been talking about it consistently on my YouTube member community also. Again, I would request all of you to join it. It's a very useful community. I give very quick updates. I cannot make videos really fast, but whatever market updates are happening, I can summarize it and present it in a sensible manner which you can easily absorb. So आप लोग वो join कर लेना. The link is in the description and comment box. It will give you very interesting commentary. It will increase your confidence in investing. I had spoken about SBI multiple times there and I had shown you all the levels. So मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ. So on SBI, I had made a video a few days earlier and I had said that we are likely to see a very quick 16% gain and वो करीब आ चुका है, राइट. अब ये 16% नंबर कैसे आया था यार, इसमें एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा था, राइट. अगर आप वो स्टिक करोगे तो इसमें सेलिंग टारगेट करीब 780 के आसपास निकल के आता है. सो SBI उस हिसाब से ही चल रहा है, पूरी कहानी बना रहा है, राइट. एंड अगेन इफ यू जस्ट गो एंड चेक द फंडामेंटल डेटा ऑन SBI, अगेन द सेम स्टफ, राइट. आई मीन देयर इज नथिंग लाइक ऑफ हैपनिंग ऑन SBI, राइट. अगर आप इसका देखोगे फॉर एग्जाम्पल पीयर एनालिसिस देख लो तो SBI इज एट अ PE ऑफ 9.88. पंजाब नेशनल बैंक जिसमें विच आई हैव सोल्ड, आई रोटेटेड दैट कैपिटल टू SBI एंड SBI में नाउ आई एम सिटिंग ऑन रफली 26-27% प्रॉफिट सिंस द टाइम आई हैव बॉट इट. यार PNB 19 के PE पे चल रहा है, 19 PE पे. SBI इज वर्किंग एट हाफ दैट PE. सो वाई इज इट दैट SBI PE will not rise, or
opposite could happen, that PNB का PE fall हो जाए. So in either of these scenarios, if you're bullish on the banking industry, then you need to have these type of stocks in your portfolio. These are low risk assets. Now why am I calling this low risk asset? Because barring a very minute chance कि कुछ घपलेबाजी हो गई, under general circumstances, general economic conditions, it is very, very unlikely that these type of stocks will correct by more than 15-20% unless you are buying them at very high valuation. This is the most important point. कि for example, अगर आप अभी पंजाब नेशनल बैंक जाके खरीद लो, so now it is already at 19 PE, right? And its peers are at like 9-10 PE. So because you are buying Punjab National Bank at very high valuation, the chances are that it might happen that it just stops, right? It just keeps on going sideways and it becomes a problem for you. But भाई आपको HDFC मिली 15 के PE पे आए, right? आपको SBI मिली 9-10 के PE पे आए, and that too for a company which is generating very high revenues, very high profits. So I hope that this story is clear. Where do I see HDFC Bank and SBI going from this point? If I have to give you some numbers, I definitely do see HDFC Bank giving a 30% odd CAGR over the next 2 to 3 years. 30% के CAGR पे चलेगा. Something around 20-25% CAGR is something that I am expecting on SBI. How am I reaching those numbers? So tomorrow I will try to write a post on community membership. So ये तो हो गई लो रिस्क एसेट्स की बात. अब बात करते हैं हाई रिस्क एसेट्स. सो यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड इंडस्ट्री आ जाती हैं एंड देयर आर 4 स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. द फर्स्ट इज दैट सी इंडस्ट्री में किसी तरीके का टर्न अराउंड होना चाहिए, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल पिटी पिटाई इंडस्ट्री है एंड यार वो एकदम से चल पड़ी. फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन फार्मा, समथिंग इज हैपनिंग इन केमिकल, कि यार ये इन इंडस्ट्रीज की इतनी कुटाई हो चुकी थी, इतनी पिटाई हो चुकी थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. सो दीज आर ऑल पिटी पिटाई इंडस्ट्रीज. For what reason they got पिटी पिटाई, that's an entirely different conversation. But right now अगर आप 5-6 स्टॉक्स जाके देख लो इस इंडस्ट्री में, so you will clearly see कि फार्मा, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये भाई भारी भरकम पिटी पिटाई इंडस्ट्री है. सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो पिटी पिटाई इंडस्ट्री. सो इन दिस टर्न अराउंड चांसेज आर वेरी वेरी हाई. आप ऑपोजिट अगर करके बैठे हुए हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल IREDA, राइट, रियल स्टॉक्स, उसमें ऑपोजिट है कि भाई इतनी चढ़ी चढ़ाई इंडस्ट्री है कि उसमें पिटना है उनको एक दिन, राइट? सो इनमें निकल जाओ. दैट्स अ सिंपल पॉइंट. ओके, सो दिस इज वन. सेकेंड इज दैट इन दोज स्पेसिफिक कंपनीज दैट यू आर टचिंग, the numbers or the profit, revenues, growth rate should be fairly high. Okay, the valuation from a PE point of view should not be very high, because when you are trying to buy risky stocks, what is it that you are trying to do? Well, you are trying to probably pick bets that can go 3x 5x in the next 3 years. So अब बहुत भारी भरकम PE वाली कंपनियां खरीदोगे तो यार कैसे पैसा बनेगा, राइट? नहीं बनेगा. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो देयरफॉर यू हैव टू बाय व्हेन कंपनीज आर एट लोअर PE. फाइनली द साइज ऑफ द कंपनी शुड बी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी खरीद लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो फाइनेंस, नाउ मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इट सेल्फ इज वेरी बिग. सो जियो फाइनेंस इज अ वेरी गुड 2x बेट. मैंने आज भी खरीदा था जियो फाइनेंस, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ 5x 10x बेट इन द नेक्स्ट 3 years. अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अनलाइकली कि यार उसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो 5x 10x रिटर्न दे दे, राइट? सो दैट इज़ द व्यू पॉइंट. एंड ये आपको 4 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. From that lens, let me analyze a couple of stocks. This is not a recommendation. आप अपने हिसाब से देख लेना whatever you want to do. But I will just simply apply this framework and show it to you. अब जैसे the first stock that I have been commenting on is Nuvama Wealth, right? And yesterday it gave like around 12% run up. Today it gave 8% run up. Okay, 8-9% run up. 8.77 है आज उसका. Now already I had built my position on this, right? I had been commenting a lot on this stock also. And अगर आप इसमें numbers देखो तो भाई इसमें बढ़ क्यों गया? क्योंकि अभी इसके results आए थे. Results were exceptionally good. लेकिन ये तो यार देखो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, राइट? इससे पहले अगर आप कहानी देखो तो यार मार्केट कैप बहुत ज़्यादा थी इस कंपनी की. नहीं, पी कितना था? पी बहुत ज़्यादा नहीं था. अभी तो बढ़ गया क्योंकि प्राइस बढ़ गई है उसकी. बट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव पी इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई फॉर अ स्मॉल कैप मिड कैप टाइप ऑफ अ कंपनी. ऑन टॉप ऑफ दैट द कंपनी इज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट. जैसे अगर आप इसका नंबर्स चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल गो चेक प्रोडक्ट सेगमेंट, you will see कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है. नाउ द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया itself is growing at 12 to 15%. नाउ which is a good strong brand organization that is backing Nuvama Wealth. So आप यहाँ से देख सकते हो that it is formerly Edelweiss Wealth Management. यार अब ये बड़ी कंपनी है, इट्स नॉट एज इफ कि यार Edelweiss का नाम नहीं है.
अच्छी खासी कंपनी है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स नॉट एज इफ कि नोवामा के बाजे बज जाएंगे. इट्स इन ऑलरेडी इन अ ग्रोथ इंडस्ट्री. वैल्यूएशन उसका अच्छा था. वेल्थ मैनेजमेंट इज इन अ टर्न अराउंड. ऐसा कोई खास इंटरेस्ट आया नहीं था अभी तक वेल्थ मैनेजमेंट में, अब आने लग गया है. जैसे एंजल वन हो गया, आपका 5 पैसा हो गया, तो ब्रोकरेज में बहुत इंटरेस्ट आ गया. AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनमें बहुत इंटरेस्ट आ गया था लास्ट 6 मंथ्स में. सो आई फील वेल्थ मैनेजमेंट इज अ गुड स्पेस टू बी इन ओवर द नेक्स्ट 5 years. Typically in India this type of company can go 3x to 5x. So इसलिए मैंने थोड़ी सी पोजीशन बना ली थी. On top of that अगर मैं आपको क्विकली फ्रेमवर्क के थ्रू ले चलूँ, नंबर्स हैव बीन ग्रेट. अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, वैल्यूएशंस का बहुत ज़्यादा नहीं था. साइज ऑफ द कंपनी वॉज स्मॉल एंड मार्केट कैप वॉज स्मॉल. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी अ 3x 5x टाइप ऑफ अ ग्रोथ स्टोरी. प्लीज़ ये चीज़ नोट कर लेना कि यार व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट कंपनीज विच कैन गो 5x 3x, तो आपको 50-60% करेक्शन के लिए भी रेडी रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको 3 to 5x वाली कंपनी बता दूं और भाई साहब वहाँ तो 10% का नुकसान हो गया, 20% का नुकसान हो गया. सी गाइस, यू आर बाइंग लाइक अ कंपनी विच इज 1400 crores. अब इसमें इफ अ बिग इन्वेस्टर पुल्स आउट 200 crores, तो यार वो एक दिन में उसकी वैल्यूएशन बहुत गिर सकती है. सो प्लीज़ हैव दिस बेसिक कॉमन सेंस. ओके, अब आप बोलोगे कि यार आपने तो ना ऐसे यार जिसमें आपका पैसा बन गया आपने वो बता दिया, राइट? ऐसा कुछ बताओ जिसमें पैसा बन सकता हो. सो अगेन दैट सेम स्टोरी. सो अगर आप जाओ समथिंग विथ लाइक SW सोलर, नाउ दिस इज अ कंपनी दैट आई एम बाइंग. वाई? बहुत सिंपल सा रीज़न है. अगर आप इसमें इन्वेस्टर टैब पे जाके देखोगे आपको प्रमोटर दिखेंगे रिलायंस. ओके, एंड इनने कब स्टेक पिक करा था? इनने करा था मार्च 2022 में. ओके, सोलर इंडस्ट्री में विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू विल फेस? रेगुलेशन. कि भाई उनको रेगुलेशन के थ्रू ऐसा तो नहीं कि कुछ मार पिटाई हो जाएगी, काटम काट हो जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू हैव टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि अच्छा इफ रिलायंस इज बैकिंग इट अप, रेगुलेशंस तो ये लोग हैंडल कर लेंगे. ओके, SW सोलर इज वॉट? इट इज़ एन EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन. नाउ हाउ डज EPC बिजनेस सर्वाइव? वेल, बाय गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. Now, what is contract getting? It's जुगाड़ का game. Okay, so why is it that Reliance will be unable to get contracts for like this company? अब आप बुद्धि लगा लो उसमें. ओके, एंड आप इनकी ऑर्डर बुक चेक कर लो कि भाई इनकी कितने की ऑर्डर बुक है. बिकॉज वंस द ऑर्डर बुक इज देयर देन दे आर गोइंग टू फिल इट, देन उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा एंड इसके नंबर्स बढ़िया आ जाएंगे, राइट? सो ऑल दोज बेसिक पॉइंट्स आर देयर. अब 2022 में जाके रिलायंस ने स्टेक पिक किया है, तो यार 2-3 साल तो लगेंगे ना टर्न अराउंड में. एंड अब आप बोलोगे मैं तो 3 साल बाद खरीदूंगा. भाई खरीद लेना तब. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस हाइपोथेसिस टर्न्स राइट, you will have to then buy it at 3x 5x the entire game. Okay, now why am I buying SW solar as of now? क्योंकि सोलर में क्या हो रहा है? टर्न अराउंड हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुजलॉन देखो, इनफैक्ट सोलर नहीं, एंटायर रिन्यूएबल्स में टर्न अराउंड हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुजलॉन देखो तो आपको पता चलेगा, एंड मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ. सो यहाँ से आप देखोगे कि इट यूज टू बी 14 रुपीज़ एंड बढ़ते कितना हो गया? ऑलमोस्ट 50 रुपये हो गया. सो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया, बहुत क्विक सक्सेशन में. ओके, नाउ अनदर क्विक थिंग अबाउट सुजलॉन कि अगर आप इफ यू स्टडी द फॉल ऑफ सुजलॉन, राइट? सो नंबर 1 फॉल और द बिगेस्ट फॉल ऑन सुजलॉन केम फ्रॉम 355 रुपीज़ एंड वो पिटता पिटाता भाई साहब 9 रुपये पे आ गया था. वाई? बिकॉज ऑफ 2008 क्राइसिस. समथिंग सिमिलर यू विल नोटिस कि यार ये यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया था, 14-15 रुपीज़ पे पहुँच गया था एंड फिर 2 रुपये पे पहुँच गया, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ 2020 क्राइसिस. होता क्या है कि व्हेन द क्राइसिस फेज इज देयर, कि 2008 क्राइसिस हो गई, 2020 क्राइसिस हो गई, तो इसमें रिन्यूएबल्स के बाजे बच जाते हैं. वाई? बिकॉज द कैपिटल इज नॉट देयर टू सपोर्ट दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. ये थोड़े अमीर लोगों के शौक होते हैं, रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट कर देंगे ये वो, एंड दे आर ओनली एबल टू डू इट व्हेन दे हैव स्पेयर मनी लाइंग अराउंड. एंड ड्यूरिंग सच फेजेस 2008 2020 अनसर्टेनिटी फेज, वो पैसा बचता नहीं है. सो विद दैट लेंस इफ वी जस्ट क्विकली गो एंड स्टडी SW सोलर, अब आप ऐसे मान के चलो कि भाई इनका 2020 फेज में इनकी गिरावट शुरू हुई थी. ये 2019 था, 2020 आया यार. 2020 में बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई, लेकिन यार इट केप्ट ऑन गोइंग साइडवेज. अब थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. ओके, एंड कितने से चला है कि 300 रुपये के आसपास था, 300 रुपीज़. नाउ इट इज 580. इट्स नॉट एज इफ की it has gone up like crazy, right? For example, if you look at the market cap, it is only 13,500 crore, not that big compared to Suzlon and all. So can it double from this point? Yes. Can it double with Reliance's help? Yes. Okay, so that's the bet that I'm taking. You have to do your own analysis and आपको confidence हो तो then you can buy these type of high risk opportunities. वरना छोड़ दो, safe खेलते रहो, कोई issue नहीं है. I wanted to discuss more stocks which were slightly in the risk category, but I think the video will become really long. But I hope that you got the fundamentals perspective and you will be able to do your own research
Tomorrow, I will write a detailed note on some of the multi-bagger opportunities that I am considering. So I will write this note in the next 2 to 3 days on member community, and I will continue to share my market updates. So again, if you're a serious investor and need help with more research and आप थोड़ा fundamentally समझ के चीजें कर पाओ, so definitely join the YouTube member community. Everything is taught as per the recent things that are happening in the market. So आपके साथ stick कर जाती है वो चीज, and that actually adds to your knowledge repository. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video, and I will see you soon.